हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में अपन ने आ, कुछ रिट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. We have already discussed about the habeas corpus writs. We have already discussed about the mandamus writs, and now we are going to discuss about the quo warranto. Basically, quo warranto means where is your appointment. It is issued when any person which is not authorized to occupy some authority and he is illegally occupied that authority. So Supreme Court by writ petition of Q warranto can demand there where is your appointment uh, of your post. So basically issued by court to examine issued by a court to examine the legality of claim of a person through a public office. कोई पब्लिक ऑफिस है और उस पब्लिक ऑफिस पर किसी व्यक्ति ने इलीगली जो है वो ऑथराइज्ड किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे डिमांड कर सकती है बाय द रेट ऑफ क्यू वारंटो कि भाई आपके पास क्या अपॉइंटमेंट है जिसके बिहाफ पर आप इस अथॉरिटी पर हैं. इफ दे आर अनेबल टू प्रूव, देन सुप्रीम कोर्ट or the high court can remove from that post to any individual. So that is basically writ of quo warranto. If this person able to prove, then it is no problem. If that person will not able to prove, then Supreme Court or High Court will remove that person from that particular authority. So that is the basically writ of quo warranto. First we have discussed habeas corpus writ, in which if any illegal detention of any authority of any person has been done by authority or any individual, then Supreme Court can issue the writ of habeas corpus to release that person, and if detention is okay, then no problem. If detention is not okay, then release that person immediately. We have already discussed writ of mandamus, where any authority is not working their function. Because of not working their function, your fundamental right has been violated, then Supreme Court issue the writ of mandamus to order for the functioning of that particular authority. And but this writ cannot be issued against the president, against the parliament, against the state legislature, and against the governor. Now, we have already discussed writ of quo warranto, where Supreme Court can ask where is your appointment letter, basically on which behalf you are saying that you are the legal person of that authority, of that public authority. If you are unable to prove, then Supreme Court can remove that person from that particular authority. If you are able to prove, then it is okay. Now let us discuss about the writ of prohibition and certiorari. So basically both writs are apply for the lower judiciary. Both apply for lower judiciary. What do we mean by? So first we have discussed what do we mean by prohibition and what do we mean by certiorari writ. मान लो कोई भी हाई कोर्ट है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई केस एग्जामिन कर रही है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई केस एग्जामिन कर रही है, तो पहला तो केस चल रहा है, पहली बात. दूसरा हो सकता है कि केस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट आ चुका हो. दो पॉसिबिलिटी है, या तो केस चल रहा है अभी कंटिन्यू स्टेटस पे है, या उस केस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया. दो पॉसिबिलिटी है. तो जब केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए इशू कर सकती है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए इशू कर सकती है. ऐसे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए इशू कर सकती है, ऐसे हाई कोर्ट या किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए इशू कर सकती है. तो प्रोहिबिशन में क्या रहता है और सर्सियोररी में क्या रहता है, पहले सर्सियोररी समझते हैं. सर्सियोररी में क्या है कि आफ्टर द जजमेंट हैज बीन गिवन द जुडिशरी, जजमेंट आ चुका है, मतलब आफ्टर
issued by higher judiciary to lower court and others court if after after judgment has been given. नहीं, after judgment has been given. But remember this case, if this, because why it should be issued, because if judgment itself violated फंडामेंटल राइट। मान लो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मान लो एक केस है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ज्यूरिडिक्शन, कि भाई एक ऐसा फंडामेंटल प्रोसीजर है कि भाई जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर होगा, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आता है, या यूनियन और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या सीएजी के इलेक्शन, सीएजी के ऊपर कोई डिस्प्यूट है, या कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर सकती है ना। तो अगर ऐसे कोई भी केसेस को जो सुप्रीम कोर्ट केवल इंटरटेन कर सकती है, तो अगर धोखे से भी हाई कोर्ट ने उस केस को इंटरटेन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी मिली, तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ सर्स्योरी। बट रिमेंबर वन थिंग, इन दिस केस लेट अस टेक द एग्जांपल, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोई इशू था, वो इलेक्शन का इशू हाई कोर्ट इंटरटेन कर रहा था, लेकिन हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन उस पर आता ही नहीं, क्योंकि वो केस तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए। तो अगर मान लो कि हाई कोर्ट इंटरटेन कर रहा था और ये केस हाई कोर्ट इंटरटेन नहीं कर सकता था, क्योंकि ये अथॉरिटी केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो हाई कोर्ट इंटरटेन करने के बाद उसने अपना जजमेंट भी दे दिया। तो जजमेंट दे दिया, अब ये जजमेंट इनवैलिड है, क्योंकि आपके पास तो अथॉरिटी नहीं है कि आप उस केस को इलीगली आप उस केस को इंटरटेन कर सके। तो बेसिकली देन सुप्रीम कोर्ट विल इशू रिट ऑफ सर्चुरी because judgment has been given, or let us suppose if any person's right has been violated। मान लो हमारा केस था और मेरा केस था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट आया, उस जजमेंट ने ही मेरा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट कर दिया है, तो जजमेंट ने ही अगर फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, देन वी विल अप्रोच टू हाई कोर्ट एंड we will my petition will be filed there, and then high court will issue the writ of certiorari because judgment has been already given by the lower judiciary. Now when this writ has been issued, this writ has been issued before the judgment of the lower judiciary. So basically this judgment has been issued by higher judiciary before judgment of lower judiciary, basically because to stop proceeding in लोअर कोर्ट, कि भाई अगर आपको लोअर कोर्ट में किसी केस की प्रोसीडिंग को स्टॉप करना है और जजमेंट लोअर जुडिशरी ने नहीं दिया है, तो देन सुप्रीम कोर्ट विल और हाई कोर्ट विल इशू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, and according to this the case will directly go to the high court by the writ of prohibition. So that is the basically writ of prohibition and certiorari. I think both will be clear. Prohibition पहले इशू की जाती है जजमेंट के, सर्स्योरी बाद में इशू की जाती है। क्यों इशू की जाती है? कि अगर लोअर जुडिशरी के जजमेंट ही वायलेटेड है फंडामेंटल राइट को, तो ये रिट इशू की जाती है बाय द हायर जुडिशरी। नाउ ये भाई अब ऐसा हो सकता है कि ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, कि मान लो कोई क्वाजी जुडिशियल बॉडी है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कुछ मामलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है जजमेंट देने की, कुछ मामलों में लोअर जुडिशरी के पास पावर होती है जजमेंट देने की। तो ये प्रोहिबिशन, ये रिट किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। Now it should be clear. So it may be issued against administrative authority that have power to decide dispute. Now it should be okay. So this writ, this both writ
should be issued against any authority who have जुडिशरी पावर। भाई किसी भी अथॉरिटी के पास अगर जुडिशरी पावर है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये रिट इशू कर सकती है टू अगेंस्ट दैट अथॉरिटी। नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द रिट ऑफ द Supreme Court or the High Court, which has been mentioned under Article 226 and Article 32 of the Constitution of India. Now, I think it should be clear to you. Let's repeat it again. Habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition, certiorari. प्रोहिबिशन सर्सियोरसी इशू होती है किसी लोअर जुडिशरी के लिए और किसके द्वारा इशू होती है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। क्यों इशू होती है? अब प्रोहिबिशन होती है जजमेंट आने के पहले और सर्सियोररी होती है जजमेंट आने के बाद। ये किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू हो सकती है जिसके पास जुडिशियल पावर है, पहली बात। क्यू वारंटो क्या है? क्यू वारंटो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू होती है। कब इशू होती है? कि कोई पर्सन है या मिनिस्टर है या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, उसको किसी पर्सन ने इलीगली बोल रहा है कि ये मैं ऑथराइज्ड हूँ, तो देन सुप्रीम कोर्ट कहना, लेकिन वो पब्लिक पर्पस होना चाहिए। पब्लिक मतलब वो अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए, प्राइवेट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क बाय द रिट ऑफ क्यू वारंटो वेयर इज योर अपॉइंटमेंट लेटर, हु हैज अपॉइंटेड यू। By the writ of mandamus, we already discussed that if your fundamental right has been violated by non-performing of any authority, which is public authority, then Supreme Court, High Court will issue the writ of mandamus, but it cannot be issued against the president, against the governor, against the High Court, again not High Court, against the uh, Parliament, against the state legislature. Now we have already discussed writ of habeas corpus. Now, as we have discussed, principle of locus standi will not applicable on the writ of habeas corpus, but principle of locus standi applicable on all these remaining writ. But it is a very difficult process because it may be a possibility who is the aggrieved party cannot approach the Supreme Court or the High Court. So, for this, Supreme Court has been diluted the principle because they have not completely removed the principle of locus standi, but by some other method, Supreme Court has diluted the principle of locus standi. What is the principle of locus standi? Let us discuss. We have already discussed. That is, only aggrieved party can approach the Supreme Court. Now, so Supreme Court diluted the principle of locus standi. How? By the PIL method. By PIL. What is the PIL? Public interest litigation. कि भाई प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेटाई का मतलब ये था कि केवल एग्रीव्ड पार्टी ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकती है एक्सेप्ट रिट ऑफ होबियस कर्पस। लेकिन ऐसा बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि हो सकता है कि भाई जो एग्रीव्ड पार्टी है वो उस सिचुएशन में नहीं है कि आप वहां पहुंच पाए, तो इस प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई को सुप्रीम कोर्ट ने डायलोट किया। सो बाय द पीआईएल मेथड, सो व्हाट इज द पीआईएल? बेसिकली it is a method originated by Supreme Court to set aside principle of locus standi, that is to dilute it. To dilute the principle locus standi, Supreme Court came with some new innovation, that is PIL, public interest litigation. Now, what is public interest litigation? Basically, it is a if any person, if any, मान लो कि ये PIL कोई भी फाइल कर सकता है। मतलब समस्या तुमको है, ठीक है, लेकिन इस तुम्हारी समस्या को लेकर PIL मैं भी फाइल कर सकता हूँ। किसी दूसरे की समस्या है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है,
कोई समस्या है जो पब्लिक को इफेक्ट कर रही है, उस पब्लिक, भले वो मेरी समस्या ना हो, लेकिन अगर कोई समस्या पब्लिक को इफेक्ट कर रही है तो मैं पीआईएल फाइल कर सकता हूँ। दैट इज द बेसिकली पीआईएल। सो बेसिकली it can be filed by any person. Now any public spirited citizen or organization, it can also be filed by organization, can approach Supreme Court or High Court on the behalf of socio economic deprived section for enforcement their right. So basically, PIL can be filed by any person for if any fundamental right or for the effective enforcement of the right of socio-economically deprived section or marginalized section. If there is any marginalized section, or if there is any uh, मान लो कोई भी ऐसा एक काम है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है और वो इफेक्ट कर रहा है, सो इफ एनी वर्क इज इफेक्टिंग द पब्लिक पर्पस, देन any person can file the PIL in the Supreme Court or High Court. Any person and even any organization can also file the PIL for the effective enforcement of the right of individual or right of any authority. Now I think it should be clear. But remember one thing, it can be only filed for the public interest purpose, not for the individual purpose. PIL can be filed only for the public purpose. If any person says that my right will not fulfilling, then PIL cannot be filed because it is for the public interest litigation, not for the individual litigation. So I think it should be clear to you. Now let us move further. Let us discuss the advantage and concern of the PIL. What are the advantages? So because of the PIL, the democracy has been increased democracy, because now any person can approach the Supreme Court on behalf of any other person, and if even any authority is not working properly, then PIL can be filed, and it diluted the principle of locus standi, diluted principle of locus standi, and also it increases affordability, because if you are filing the writ, then it requires the uh, money. Basically, if you are going to file the writ in the High Court and the Supreme Court, the advocate of High Court and Supreme Court charge very huge fees. Even they charge for one proceeding, they charge 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, even 10 lakhs rupees for one single hearing. So this is very costly for the very poor section, because poor person cannot afford even 1 lakh rupees for 1 year. These advocates are charging 1 lakh for one hearing, and one hearing can only for 5 minutes, 2 minutes, 1 minute even. So for the 1 minute they are charging 1 lakh rupees, then how can the poor person can approach the Supreme Court and file the petition? So it affordability, increase affordability for poor section. So now PIL can be affordable for poor section as well, because any other person can file PIL on the behalf of any other person. Now it also increase the strength of society. So these are the basically advantage of the PIL. What is the concern? सो बेसिकली कंसर्न क्या हो सकता है कि पीआईएल, बहुत ऐसी पीआईएल भी फाइल की जाती हैं जो एकदम किसी काम की नहीं होती. सो बेसिकली misuse of fake PIL has been filed.
फेक पीआईएल बिकॉज ऑफ गेन पॉपुलैरिटी। हाउ? कि भाई कोई एडवोकेट है, उसको पॉपुलर होना है तो वो फर्जी पीआईएल फाइल करेगा, और फर्जी पीआईएल फाइल करने के बाद अब कोई भी मुद्दा आया जो नेशन के हित में था, लेकिन उससे इतना निगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब कोई भी एडवोकेट जाएगा और पीआईएल फाइल कर देगा, लेकिन अब नेशनल मुद्दा था, तो जिसने पीआईएल फाइल की उसकी तो पब्लिक इमेज तो बढ़ गई ना। तो फेक पीआईएल हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ गेन पॉपुलैरिटी ऑफ एनी एडवोकेट फॉर एनी इंडिविजुअल, and also it led to overburdening of judiciary because of more PIL. This has been led to the concern, and it also basically misuse of PIL has been happened. Misuse of PIL. So these are the basically concern which has been can be said against the PIL concern. Now we have discussed various writs and PIL also, because by the PIL Supreme Court has been diluted the principle of locus standi for the filing the writ or filing the any petition in the Supreme Court. What is the PIL? Public interest litigation. It can be filed only for the public purpose, not for the individual perspective purpose. Now let us discuss one more concept. What do we mean by judicial activism and what do we mean by judicial overreach? These two concepts, after discussing our fundamental right chapter, will be finished. So two concepts has been left. First is judicial activism and another concept is judicial overreach. इसका मतलब क्या है कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि भाई जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में इंटरफेरेंस. सो बेसिकली interference of judiciary in executive and legislature, therefore decreases separation of power between executive, legislature and judiciary. So if this interference is huge, so basically if it is okay because you are interfering, because of it may be a possibility that executive can violate the fundamental rights, so judiciary intervention is required. But if over interference of judiciary in executive and legislature, there then it disturb the concept of separation of power. So that is the basically judicial activism, and that is the basically judicial overreach. Now there are two concepts. First is judicial activism in the executive direction and judicial activism in the legislature direction. So basically there are two types of judicial activism: judicial activism in legislature and judicial activism in executive. What are the examples of judicial activism in legislature? So basically what is the concern? So basically in the advantage, so basically court, देखो होता क्या है ना कि भाई मान लो कोर्ट एक लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाई. अब अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाई, उसमें कोई भी एक ऐसा कंसर्न रह गया जिसको लेकर एग्रीव्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसने इस लॉ के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में.
कि भाई ये इस लॉ का ये वाला पार्ट वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को। ठीक है भाई साहब, मान लिया वायलेट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया कि भाई गाइडलाइन इशू कर दी कि भाई ये वाला फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, इसको रिमूव करो या इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर करो। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है कि जो उस पे लूप होल्स थे वो जुडिशरी फिल कर रही है ना, लेकिन ये काम जुडिशरी का तो था नहीं। जुडिशरी का काम तो केवल उसको चेक करना है कि ये लॉ वैलिड है कि इनवैलिड है। लेकिन अगर आप उसकी गाइडलाइन बना के दे रहे हैं, इसका मतलब आप लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाई है उसमें भी तुम अपनी एक पेंच लगा दे रहे हो। दैट इज नॉट ओके, because the work of judiciary is basically that is if to check that law is valid or not. You have no authority to fill the gap of the law which has been made by the legislature. So basically court fills the gap left by legislature, by left by legislature in law, by making guideline. तो अपनी वो गाइडलाइन निकाल देते हैं भाई कि ये लो, तो ये तो काम जुडिशरी का नहीं था ना। So by reforms, by guideline, by reforms, by directing them, that is not the work of the judiciary. The work of judiciary is only to check, not to make the law, not to fill the gap. That is the basically this is also the concern. You can also say about this is the also a concern. If we talk about concern, this is also the concern because court work is not to fill the gap, the work that is only to check the validity of law. Now it should be okay. Now in the executive direction, how एग्जाम्पल के तरफ हम बात करें कि जो रिट इशू होती है, इशू ऑफ रिट अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव बाय जुडिशरी टू चेक ऑन जुडिशरी, टू चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, सॉरी, टू चेक ऑन एग्जीक्यूटिव। तो भाई बाय by power which is being assigned to Supreme Court and High Court, that is writ to issue the writ. Because of this writ, judiciary have check on the executive and the legislature and the any authority. So this also dilute the principle of separation of power. Therefore, dilute the principle of separation of power. That is the basically judicial activism. Okay. Now we have already discussed judicial overreach. What do we mean by judicial overreach? Judicial overreach basically means over interference of judiciary in the matter of executive and legislature. Now, what is the example? Basically, time limit of the governor in the recent year, and direction to executive, giving direction to executive. Second example, and another example, ban of firecrackers. Another example, ban of diesel vehicle. So these are the basically words which should be done by the executive, not by the judiciary. So that is the example which are related to judicial activism in the
executive matter, and we have already discussed judicial overreach. Now, let us discuss Article 33 and 34 of the Constitution of India. Only two articles has been left. What do we mean by Article 33 and Article 34? Basically, uh, these are exceptions to fundamental right. So both are exception to fundamental right because your fundamental right cannot be violated under article under part 3, but exception has been given in the article 33 and 34 because the person who belonging who are mentioned in article 33 and 34, on that person fundamental right can be violated. So basically, what do we mean by article 33? It provide parliament power to make law for restrict or modify the fundamental right of certain organization. तो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट के लॉ से वायलेट कर सकती है. पार्लियामेंट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकती है. व्हाट आर दिस ऑर्गेनाइजेशन? बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस और मेंबर ऑफ organization who managing telecommunication, member of intelligence organization. That is basically the person who are working in any authority which is importance of national interest. Then your fundamental right can be violated by the parliamentary law. And under Article 34, if martial law has been imposed on any area, then your fundamental right can be violated. कि भाई अगर किसी भी एरिया में मार्शल लॉ इम्पोज्ड है तो आपका फंडामेंटल राइट वो कंसर्न अथॉरिटी वायलेट कर सकती है. मान लो कोई भी आर्मी मैन है और अगर उस एरिया में फंडामेंटल राइट वायलेटेड है, सॉरी मार्शल लॉ इम्पोज्ड है, तो आपका फंडामेंटल राइट वो आर्मी मैन वायलेट कर सकता है, इवन आपको गोली मार सकता है. ज्यादा चूं चाय नहीं करना चाहिए. जहाँ मार्शल लॉ लगा होता है वहां शांति से रहना चाहिए, वरना सीधा टक से गोली मार के ऊपर भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन करवा देगा. सिंपल सी बात है. तो योर फंडामेंटल राइट कैन बी वायलेटेड वेयर martial law has been imposed because of security purpose, because of national interest. So that has been mentioned under article 34 of the constitution. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आसपा 1958 either government or president can declare ASPA. Under this, even without warrant, you can be arrested or even you can be killed. You can be, आप जान से भी हाथ धो सकते हैं और आपको कंसर्न अथॉरिटी विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकती है. सो दीज आर द बेसिकली
are mentioned in Article 32 and 33 of the Constitution of India. Now, we have discussed Article 30, 32 and 33 of the 32, 34 we have discussed. Restrictions have been mentioned. 35. So let's read once, and we have completed the part 3 of the Constitution of India. So restriction on right conferred by the part while martial law is in force of any area. So where martial law is in force, then your fundamental right can be violated. Notwithstanding anything in the foregoing provision of this part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or a state or any person in respect of any act done by him in connection with the maintenance of restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force, or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered, or other act done under martial law is such area. So basically your fundamental right can be violated. Now let's read Article 33, which states that power of Parliament to modify the right conferred by this part in their application to forces. So basically it states Parliament may by law determine to what extent any of the right conferred by this part shall their application. So Parliament by law can violate the fundamental right of the member of the armed forces, of the member of the forces charged with maintenance of public order, persons employed in any bureau or other organization established by state or purpose of intelligence or counterintelligence, or person employed in or in connection with telecommunication system set up for the purpose of any force, bureau, or organization referred to in clause A to clause C be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline against them. So basically, if you are a person of armed forces, if you are a person of any bureau agency or any security agency, and if you are a person employed in any state-made agency which govern for the security purpose, and if you are a person employed in the telecommunication of any security agency, then your fundamental right can be violated by the parliamentary law. According to Article 34, where in the area where martial law is imposed, your fundamental right can be violated. These are the Article 34 and Article 33 of the Constitution of India. What do we mean by Article 35? Let's read once. Legislation to give effect to provision of this part, notwithstanding anything in the part, Parliament shall have, the legislature to shall not have. देखो भैया, पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास किसी भी प्रकार की कोई भी पावर नहीं है फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की. तो पार्लियामेंट shall have and legislature of state shall not have power to make law with respect to any of the matter which under clause 3 of article 16, clause 3 of article 32, article 33, article 34 may be provided by law made by parliament. बेसिकली पार्लियामेंट के पास ही लॉ है, पावर है फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करने की. नाउ फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट, और कोई भी पनिशमेंट अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के बाद, जैसे मान लो हमने फंडामेंटल राइट वायलेट किया किसी का, तो जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो मेरे को पार्लियामेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग दी जाएगी, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर की लॉ के अकॉर्डिंग दी जाएगी. ये बात याद रखना. On the violation of fundamental right, the punishment which should be given to you is by the parliamentary law, not by the state legislature law. Now, for prescribing the punishment for those acts which are declared to offence under this part, and Parliament shall, as soon as may be after the commencement of the Constitution, make laws for prescribing punishment for act referred to subclause 3. Parliament prescribe भी कर सकती है law. अगला पार्ट क्या कहता है? Any law in force immediately before the commencement of the Constitution in the territory of India with respect to any of the matter referred to subclause first of clause A of, or prescribing for punishment of any referred to subclause second of clause shall to be termed thereof, adoption of the modification that can be made in Article 372 continue in force until alteration or repeal amended by Parliament. तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो भी मान लो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी इन्फोर्स हुआ है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो किसी भी लॉ को डिटरमाइन करता हो या
ऐसा कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाया हो पार्लियामेंट ने, क्योंकि अभी commencement of constitution has been happened in 1950. Now the law exists, but it may be a possibility that at the time of commencement of constitution of India, there may be a possibility that there should not exist any law on violation of fundamental right. So this constitution of India says that if there is no any law, then you should be governed, you should be punished by under article 372 of the constitution of India. So that is the basically meaning of Article 35 of the Constitution of India. Now I think it should be clear to you. We have covered part 3 of the Constitution of India. Now in the next class we will discuss part 5 of the Constitution of India, not part 4. We will discuss DPSP later, but before DPSP we will discuss the part 5 of the Constitution of India. Okay.